Hello, everyone. Hello, everyone. Welcome to all of you in FFB Live Chemistry class. स्टेट ऑफ मैटर ये चैप्टर तुम लोगों का चल रहा है जिसमें हमने अभी डिफरेंट गैसेस लॉस के बारे में डिस्कस किए हैं, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस की है और साथ में इस गैसेस लॉ पे जो बेस्ड है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वो पिछले क्लास में बताई थी। तो आज का क्लास जो है वो गैसेस लॉ किस तरह से डेविएट करते हैं या गैसेस डेविएट करते हैं जो उनके लिए लॉज डेवलप फॉरवर्ड किए गए हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि डेविएशन ऑफ ऑफ बिहेवियर ऑफ गैसेस। उस पे हम मेनली डिस्कस करेंगे वॉन्डर वॉल्स का इक्वेशन जो उन्होंने रियल गैसेस के बारे में दिया, उसके अलावा रियल गैस एंड जो हमने अब तक स्टडी की है आइडियल गैस, उसमें क्या डिफरेंस होता है। अभी तक जो भी लॉस पढ़े हैं वो आइडियल गैस को लेके हुए हैं, जबकि सारी गैसेस आइडियल नहीं होती बल्कि वो रियल गैस कहलाती है। तो टॉपिक ऑफ टुडे क्लास deviations from ideal gas behavior. The gas which conforms to all of postulates of kinetic theory or which obey Boyle's and Charles' law rigidly for all values of temperature and pressure or which strictly follows the general gas equation PV is equal to nRT is called ideal or perfect gas. Actually, no gas is ideal or perfect in nature. Under ordinary conditions, only those gases nearly behave as ideal or perfect which have very low boiling points such as nitrogen, hydrogen, etc. A real gas is one which actually exists, either it obeys gas laws strictly or not. Real gas obey the gas equation only approximately and also at low pressure and high temperature. Gases generally deviate at high pressure and low temperature. The most easily liquefiable and highly soluble gases such as carbon dioxide, ammonia, carbon dioxide and sulfur dioxide show larger deviations. Now, effect of pressure. A very convenient method of studying deviations of real gas from ideal behavior is through a compressibility factor Z. Mathematically, Z may be expressed as Z is equal to PV upon nRT. Z can also be expressed as the ratio of real volume to the ideal volume as follows. ये यहाँ पे ये प्लॉट दिया हुआ है, z इज इक्वल टू होता है पी वी अपॉन एन आर टी। तो z की वैल्यू प्लॉट की गई है अगेंस्ट प्रेशर। तो जब ये z की वैल्यू 1 है तो ये आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है गैस, और जब ये z कम होता है तब ये रियल गैस की तरह बिहेव करती हैं गैसेस, और जब z की वैल्यू ज़्यादा होती है 1 से तब ये किस तरह से बिहेव करती हैं। तो इस तरह ये पहले डायग्राम देख लो। N2 के लिए ये इस तरह से N2CH4 और CO2 के लिए इस तरह से गए हैं कर्व, जबकि HE जो 1 से स्टार्ट होके Z की वैल्यू यहाँ बढ़ रही तो HE का इस तरह से ग्राफ आता है। तो इसको ग्राफ को देखने के बाद हम 1 बाई 1 हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। Z इज इक्वल टू V रियल अपॉन V आइडियल होता है। In case of ideal gas, Z is equal to 1, then PV is equal to nRT. In case of real gas, Z is equal to not 1, that is PV is equal to
नॉट इज इक्वल टू आर टी। तो अभी देखा कि कौन सी गैसेस किसके लिए z की वैल्यू 1 है और किसकी लेस देन 1 है और किसकी लेस देन 2 है। यहाँ पे एक बार फिर देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं। ये लेस देन 1 वैल्यू किसके गैसेस के लिए है, H2, उसके बाद CH4 और CO2 के लिए और मोर देन 1 है Z की वैल्यू यहाँ पे। यहाँ से जो नीचे जब ये पोर्शन है वो इन गैसेस के लिए z इज इक्वल टू लेस देन 1 और यहाँ पे z इज इक्वल टू मोर देन 1। अब इस कर्व देखने के बाद जो 1 बाय 1 एक्सप्लेनेशन है उससे ये चीज़ें क्लियर होंगी। Thus, in the case of real gas, the value of Z is either less than 1 or more than 1। तो जो सीधी लाइन थी कर्व में उसके नीचे जो Z की वैल्यू है या तो एक से ज़्यादा है या एक से कम है, तो वो सारी रियल गैस के लिए होती है। When Z is equal to more than 1, the gas shows positive deviation from ideal behavior and is less compressible, यानी उसको कंप्रेस कम किया जा सकता है। इन केस z इज लेस देन 1, द गैस शोज निगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एंड इज मोर कंप्रेसिबल, ज़्यादा कंप्रेसिबल उसे किया जाता है जा सकता है। द z वैल्यूज आर प्लॉटेड अगेंस्ट p फॉर गैसेस सच एज H2, He, N2, CH4 and CO2। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस कैन बी मेड फ्रॉम द कर्व। जो कर्व अभी देखा सामने उससे क्या ऑब्जर्वेशन हमें मिलता है उसके बारे में। नो रियल गैस गिव्स ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स। ओके, सेकेंड पॉइंट, द गैसेस लाइक नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा एट लो प्रेशर द डेविएशन इज निगेटिव। देख सकते हो लो प्रेशर पे डेविएशन निगेटिव हो रहा है। यहाँ पे ये डेविएशन नीचे की तरफ आ रहा है इन गैसेस का। The value of Z increases with increase of pressure. At a definite pressure, the gases behave as ideal and at higher pressure show positive deviation. Third point, hydrogen and helium always show positive deviation, that is Z is always greater than 1। अब PV is equal to RT के बीच जब ग्राफ खींचा जाता है तो इस पे क्या ऑब्जर्वेशन आता है। At very high pressure, R gases show positive deviations, ये पहले वाले ग्राफ के बारे में है, and the deviation increase with increase of pressure। The fifth point is when Z is equal to 1, this is ideal gas, the graph Z versus P will be straight line with zero slope. It will be straight line parallel to the pressure axis। Now when Z is less than 1, then V real is less than V ideal, यानी जो रियल गैस का वॉल्यूम है वो आइडियल से कम होगा जब Z कम होगा 1 से। That is the gas will be more compressible than the expected from ideal behavior। It means the attractive force will dominate the repulsive force। ये प्रेशर अगेंस्ट वॉल्यूम में रियल गैस के लिए कर्व आता है इस तरह से और आइडियल गैस के लिए इस तरह से। When Z is equal to less than more than 1, then V real यानी V real गैस का वॉल्यूम कम होगा V आइडियल से। तो Z अगर ज़्यादा है 1 से तो V रियल का वॉल्यूम ज़्यादा होगा आइडियल गैस से, और Z अगर कम है 1 से तो V real यानी वॉल्यूम ऑफ द रियल गैस इज मोर देन आइडियल, इज लेस देन आइडियल गैस। दैट इज द गैस इज, अब इस केस में Z इज इक्वल टू मोर देन 1, देन द गैस इज लेस कंप्रेसिबल than that expected from ideal behavior। It means the repulsive forces will dominate। Now effect of temperature।
The PVP curve for nitrogen at different temperature shows in कौन सा है डायग्राम, ये वाला है जो पहला डायग्राम था जो बीच में आ गया, ये पीवी अगेंस्ट पीवी अगेंस्ट प्री, यानी ये प्रेशर बढ़ते हुए पीवी की वैल्यू प्लॉट की गई है एट टी 1 टेम्परेचर, एट टी 2 टेम्परेचर, एट टी 3 टेम्परेचर। क्या है, प्लॉट ऑफ अगेंस्ट पी फॉर नाइट्रोजन एट डिफरेंट टेम्परेचर। T4 सबसे ज़्यादा कम टेम्परेचर है, T1 फिर बढ़ता जाता है T2, T4, T3, T4। तो इस कर्व का एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखो। The PV versus P curve for nitrogen at different temperature is shown in the figure. It is observed that as the temperature is raised, the dip in the curve becomes smaller and smaller. इस पॉइंट को देखने के लिए फिर हम डायग्राम पे जाएंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो टिप ऑफ द ये है टेम्परेचर, ये जो कर्व है टिप ऑफ द कर्व इस तरह से ये कम होता जाता है। कम टेम्परेचर पे इतना है, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया गया तो इतना हो गया, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ। यही चीज़ इसका एक्सप्लेनेशन आगे देखते हैं। This means that deviation from ideal behavior becomes less and less, यानी जहाँ जैसे जैसे डिप कम होता जाएगा तो deviation from ideal behavior becomes less and less with increase in temperature, यानी टेम्परेचर जैसे ज़्यादा होगा तो गैसेस रियल गैस से आइडियल की तरफ बढ़ती है। एट ए डिफिनिट टेम्परेचर द डिप in the curve vanishes and the gas follow ideal behavior for an appreciable range of pressure. This temperature is called Boyle's temperature. Boyle's temperature T4 is less than T3 and T3 less than T2 and T1 is different for different gases. नाउ डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल गैस। तो अभी हम डिस्कस करते जा रहे हैं कि आइडियल गैस और रियल गैस दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। आइडियल गैस, दीज गैसेस ओबे गैस लॉज अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी जो गैसेस लॉज पढ़े हैं अब तक, चार्ल्स लॉ, बायस लॉ, उसके अलावा और लॉ, सारे जो रूल्स हैं उनका, लॉज हैं उनका, आइडियल गैस फॉलो करती है। जबकि रियल गैसेस ओबे गैस लॉस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर ओनली। Ideal gas obey ideal gas equation, that is PV is equal to nRT, but the real gas obey Vander Waals equation of state P plus A n square upon V square, V minus NB is equal to nRT। इस पे हम अभी आगे इसका डेरिवेशन करेंगे। Compressibility factor is equal to unity for ideal gas, while compressibility factor is never equal to unity in real gas. In ideal gas, intermolecular forces among gas molecule is zero, but in real gas, intermolecular forces among real gas molecule is never equal to zero. Now, conclusion of this discussion: in real gas, deviations are less at low pressure and high temperature, that is when volume are large. ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ज़्यादा छोटा हो जाता है। Now, causes of deviations and correction for deviations. और इस काम को कैसे किया गया, वॉन्डर वॉल्स इक्वेशन आया जब, तब ये जो डेविएशंस है फिर उसके बाद उसका करेक्शन किया गया थ्रू वॉन्डर वॉल्स इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। This is the important law, van der Waals equation for real gases. It is observed that deviations from gas laws are high under high pressure and low temperature. Van der Waals suggested that these deviations are due to the following two faulty assumptions in the kinetic theory of gases.
Actual volume of the gas molecule is negligible as compared to the total volume of the gas. Second point, intermolecular attraction are not present in gas. Wander was pointed out that in case of real gases, molecules do have a volume and also exert intermolecular attractions, especially when the pressure is high and temperature is low. He applied two corrections. First, volume correction. Wander was assumed that molecules of a real gas are rigid spherical particles which possess a definite volume. Thus, the volume of the real gas, that is volume available for the compression or movement, is therefore actual volume minus the volume occupied by gas molecules. If B is the effective volume of the molecule, the B, note it down, the B is the effective volume of the molecules per mole of the gas, then the ideal volume for the gas equation is V minus B, not V. That is corrected volume is Vi is equal to V minus B for 1 mole of the gas, and for n mole of the gas Vi is equal to V minus N B. B is termed the excluded volume, which is constant and characteristic of each gas. The excluded volume B is actually 4 times the actual volume of the gas molecule. Now, second correction is pressure correction. A molecule in the interior of the gas is attracted by other molecules on all sides. These forces thus are not effective, so equal and opposite forces cancel each other. However, a gas molecule which is just going to strike the wall of the vessel experience an inward pull due to unbalanced attractive forces. Therefore, it strikes the wall with less momentum and the observed pressure will be less than the ideal pressure. Then the ideal pressure हो जाएगा observed pressure plus P dash. The P dash is the pressure correction, यानी ideal pressure जो होगा वो observed pressure से ये है the observed pressure will be less than the ideal pressure और observed pressure में P dash जोड़ा जाएगा जो कि pressure correction है. Pressure correction depends upon two factors. First, the attractive forces exerted on a single molecule about to strike the wall is proportional to the number of molecules per unit volume in the bulk of the gas. Second point, second factor, the number of molecules striking the wall, which is also proportional to the number of molecules per unit volume of the gas. Both these factors are proportional to the density or molecular population density of the gas. Therefore, the attraction force is proportional to the square of the density of the gas. That is P dash proportional total attractive force, which is proportional to b square, and b is equal to 1 upon b, then proportional to 1 upon b square, and p dash is equal to a upon b square, where a is constant depending upon the nature of the gas and v is the volume of the 1 mole of the gas. Thus, the corrected pressure P ideal is equal to P observed plus A upon B square. Making both the correction, the general gas equation PV is equal to RT may be written as P plus A upon B square under V upon B is equal to RT. This is the van der Waal equation. This equation is called van der Waals equation. The van der Waal equation for n mole of the gas is, तब यहाँ n whole square हो जाएगा P plus n square A upon B square V minus NB is equal to nRT. This is the van der Waal equation, and this is for the n mole of the gas. The van der Waal equation is obeyed by real gases over a wide range of temperature and pressure, and hence this equation is called equation of state for real gases.
It contains A and B are called van der Waals constant, and they are characteristic of each gas. Values of A and B for some gases are given here. For hydrogen, for helium, for nitrogen, so please note down all of this. And for nitrogen, for oxygen, for carbon dioxide, and for carbon monoxide. यूनिट ऊपर दी हुई है, इस यूनिट में किसकी वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कौन कितनी है और ये बी की वैल्यू कितनी है, सबकी ये यूनिट दी है। ए के लिए है लीटर स्क्वायर एटमॉस्फेयर मोल -2 और इसकी है लीटर पर मोल। Now significance of A. The constant A is related to intermolecular attractive forces. Gases having higher values of A can be liquefied easily. And significance of B, the constant B is related to the size of the molecule. Larger the size of the molecule, higher is the value of B. The value of B is 4 times the actual volume of the molecule. The units of van der Waals constant A and B are expressed in terms of the unit of pressure and volume. The pressure correction P dash equal to होता है N square upon V square, and this is अब A निकाला जाएगा तो हो जाएगा P dash V square upon N square, P pressure volume square upon mole square. Thus, if pressure and volume are expressed in atmosphere and liter, thus the unit of constant A will be the atmosphere liter to the power -2 mole -2 to the power -2. in ये हो जाएगी इसकी एटमॉस्फेयर लीटर टू द पावर 2 मोल माइनस एसआई यूनिट में हो जाएगा nm4 प्लस मोल -2 एंड पा m6 mole -2 or atmosphere decimeter to the power 6 mole -2. D is the effective volume of the gas molecule in 1 gram mole of the gas. Thus the unit of B is the same as for the volume, that is liter per mole. SI यूनिट में हो जाएगा B इज इक्वल टू लीटर क्यूब मोल -1 और डेसीमीटर क्यूब मोल -1 to the power -1. Now, exceptional behavior of H2 and H3. It is observed in figure 5.11 that the value of Z for H2 and He is always greater than 1 and increase with the increase of pressure. This is due to the fact that A for hydrogen and helium, that is intermolecular attractive forces are very small. Therefore, A upon B square is negligible. Van der Waals equation thus becomes ये हो जाएगा P is equal to V minus B is equal to R2 RT. So PV minus RB is equal to RT. PV is equal to RT plus PV. सॉल्व करते हुए आएंगे तो Z is equal to 1 plus RB upon RT. That is, Z is always greater than 1 and increase as P increases. Now, critical phenomenon and liquefaction of gases. During the early part of 19th century, a number of gases such as carbon dioxide, sulfur dioxide, ammonia, etc. were liquefied by subjecting the gas to low temperature and high pressure. On cooling, the kinetic energy of the gas molecule decreases. The low-moving molecules come nearer to each other due to force of attraction and thus aggregate and are converted into liquid. The increase of pressure can also bring the gas molecules closer to each other and thus is helpful in converting a gas into liquid. The effect of temperature is rather more important than part of pressure. The essential condition for liquefaction of gases were discovered by Andrews in 1869 as a result of his study of pressure, volume, temperature,
relationship for carbon dioxide. It was found that above a certain temperature, it was impossible to liquefy a gas either the pressure was applied. The temperature below which the gas can be liquefied by the application of pressure alone is called critical temperature and represented at Tc. The pressure required to liquefy a gas at this temperature is called critical pressure Pc. The volume occupied by one mole of the substance at critical temperature and pressure is called critical volume Vc. So PC, TC and VC. The result of induced experiments are shown in which the pressure is plotted against volume at various temperature for carbon dioxide. Each pressure volume plot is called isotherm. तो पहले हम इस isotherm को देख लेते हैं. इसमें क्या हो रहा है, ये पूरा डायग्राम इस तरह से है. प्रेशर और वॉल्यूम को प्लॉट किया गया है. यहाँ पे गैस ए और एक्स से वाई पोजीशन और ये लिक्विड, ये जो गैसेज स्टेट है ये लिक्विड इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाती है जो लिक्विड और गैस के बीच में है. तो ये नाइट्रोजन के लिए प्लॉट किया गया है. ये प्रेशर पी यहाँ पे इस तरह से देख सकते हो. जो भी सारी चीज़ें देखने के बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे. डायग्राम को स्केच कर सकते हो, अपनी कॉपी पे स्केच करो, उसके बाद फिर आगे जो चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं उसको नोट करके फिर से इसको पढ़ सकते हो. Now consider an isotherm at 13.1 degree centigrade. लास्ट में जो दिया है टेम्परेचर, इसका पहले देखने के बाद ये 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ए टू एक्स इस तरह से है, फिर ए टू वाई, फिर वाई से ये जेड लिक्विड में चेंज हो रहा है. ये स्टेट इधर की कहलाती है, ये गैसियस स्टेट है और इधर लिक्विड स्टेट है, और ये दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट को दिखाता है. तो अब हम इसके बारे में आगे बात करेंगे. At 13.1 degree centigrade, at low pressure, carbon dioxide is entirely gaseous and is represented by the point A in the isotherm. On increasing pressure, volume decrease as shown by the portion A x. जब pressure decrease कर रहा है तो जो portion दिखाया है AX of the isotherm, approximately in accordance with Boyle's law. At x, deviation from Boyle's law begin to appear and volume decrease rapidly as the gas is converted into liquid. At point Y, carbon dioxide has been completed liquefied. Between X and Y, pressure remains constant and both the gas and liquid phase are in equilibrium. The pressure corresponding to the horizontal portion XY of the isotherm is the vapor pressure of the liquid at temperature of the आइसोथर्म. तो ये जो प्रेशर है इस बीच में, ये वेपर प्रेशर कहलाता है आपका गैस का, एंड दिस इज द क्रिटिकल प्रेशर. आइसोथर्म फॉर कार्बन डाइऑक्साइड शोइंग क्रिटिकल रीजन. अब ये है द आइसोथर्म एट 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड shows a similar behavior except that liquefaction. 2 minutes. The isotherm at 21.5 degree centigrade shows similar behavior except that liquefaction starts at high pressure and the horizontal portion Mn is shorter. As the temperature is raised, the horizontal portion of isotherm becomes smaller and
स्मॉलर, इस तरह से टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन छोटा होता जा रहा है और लास्ट में ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल भी छोटा हो जाएगा एट पॉइंट पी। Until at 31.1 degree centigrade, at which it reduced to point P. Point P is called critical point. At this point, the boundary between liquid and gas phase disappears, indicating that both the phase have identical characteristics. Above 31.1 degree centigrade, there is no indication of liquefaction. This isotherm at critical temperature 31.1 डिग्री is called critical isotherm. तो जब देख रहे होगे इसको तो पहले जो प्लॉट जो डायग्राम दिखाया है उसको एक स्केच करके सामने रख के फिर ये एक्सप्लेनेशन नोट करते जाओगे और समझते जाओगे. This isotherm has critical temperature 31.1 degrees called critical isotherm. The tangent and critical point P is horizontal so that dP upon dV at critical point will be 0. Thus the point P is also called the point of inflection. It may be concluded from this explanation that in the area to the left of the dotted line below the critical isotherm, only liquid carbon dioxide exists. To the right of the dotted line, only gaseous carbon dioxide exists. The horizontal portion within the dotted line shows the equilibrium between gas and liquid phase. सारी चीज अभी दिखा करके बताया था. Now Vander Waal equation and the critical constants. The Vander Waal equation and the critical constant. The Vander Waals equation for 1 mole of gas is given by equation है Vander Waal का 1 mole gas के लिए P plus A upon V square, P minus V is equal to RT. This equation may be written as PV प्लस ए अपॉन बी माइनस बी बी, दोनों को ओपन करके माइनस ए बी अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू आर टी, और पी वी थ्री प्लस ए वी माइनस पी बी वी क्यू वी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस आर टी वी स्क्वायर इक्वल टू 0. इस तरह से लिख सकते हैं. डिवाइडिंग above इक्वेशन बाई पी वी गेट, पूरे इक्वेशन को p से डिवाइड किया तो वी गेट वी क्यू प्लस ए बी अपॉन पी माइनस बी वी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन पी माइनस आर टी वी स्क्वायर अपॉन पी इक्वल टू 0. Arranging in descending powers of v, we get v cube minus v plus rtp into v square plus ab upon p minus ab upon p is equal to 0. Equation 1 is a cubic equation in V, and therefore for any value of P and T, it will have 3 values of V, all of which may be real or none. One may be real and the other two imaginary. अब पूरे लंबे चौड़े डेविएशन पे ना जाके हम ए बी सी की वैल्यू पे आते हैं. वी कैन एक्सप्रेस द कांस्टेंट ए बी एंड आर इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट एज बी इज इक्वल टू वी सी अपॉन 3 and A is equal to 3 PC VC square and R is equal to 8 PC VC upon 3 TC. ये PC VC क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम. नाउ क्रिटिकल कांस्टेंट ऑफ गैसेस PC, VC एंड TC यहाँ पे दिया हुआ है. TC टेम्परेचर में होगा केल्विन, VC cm क्यूब मोल -1 एंड TC एटमॉस्फेरिक प्रेशर में. तो हीलियम के लिए तीनों की वैल्यू, हाइड्रोजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए, नियॉन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, अमोनिया, इन सारी चीज़ों के लिए तीनों की वैल्यूज यहाँ पे दी हुई है, जिसको
लर्न करो या अपने पास नोट करके रख सकते हो। एक समय आने पे इसका यूज होगा, जैसे न्यूमेरिकल्स है या कहीं हमको एक्सप्लेन करना है कि किसी चीज़ को, तो वहाँ इसका ये चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। उसी तरह मेथेन का भी दिया हुआ है, और एथेन और एथिलीन का। Tendency of liquefaction of a gas. Easily liquefiable gas have greater intermolecular forces, which is represented by high value of A. Thus, greater will be the value of A. थोड़ा साफ नहीं है, बड़ा होने पे और ना गंदा हो जाए पैरा। Tendency of liquefaction of a gas. Easily liquefiable gases have greater intermolecular force, which is represented by high value of A. Thus, greater will be the value of A, more will be its liquefagibility. Easy liquefiable gases are सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड, फिर अमोनिया, फिर वाटर वेपर, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। डिक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट ए में होता आ जाती हैं ये, तो लिक्विफेबल सबसे ज़्यादा कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड, फिर अमोनिया, फिर वाटर वेपर, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। और डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी ए की वैल्यू सबसे कम इसके लिए, फिर इसके इस तरह से। Above gases have higher value of A as compared to the permanent gas O2, N2, H2, HCl. Incompressibility of a gases, van der Waals constant G represent the excluded volume, that is 4 times the volume occupied by the gas per mole. Value of B remains constant over a wide range of temperature and pressure, which implies that gas molecules are incompressible. Now some examples is here. 1 mole of carbon dioxide was found to occupy a volume of 1.32 liter at 48 degrees centigrade. Calculate the pressure exerted by the gas. Ideal gas equation. And second, Van der Waal gas equation. Y A is equal to 3.59 liter, B is equal to 4.27 into 10 to the power minus 3, and R is equal to 0.082 liter atmospheric. ये वैल्यूज हैं वी टी आर की। टी के लिए 7273 ऐड कर दिया जाएगा तो हो जाएगा 321। तो फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, तो जो तुम्हारा वंडर वाली इक्वेशन हो जाएगा रखने पे आर टी अपॉन वी फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए इज इक्वल पी वी इज इक्वल टू आर टी। सारी वैल्यूज पुटअप करेंगे इसमें से, तो ये आएगा 19.94 एटमॉस्फेयर। फॉर 1 मोल ऑफ ए रियल गैस यूजिंग van der Waal इक्वेशन में सारी वैल्यूज रखी जाएंगी, तो इसके लिए आ जाएगा P is equal to this. The second example, calculate the average volume available to a molecule in a sample of nitrogen gas at NTP. What is the average distance between the neighboring molecules if a nitrogen molecule is assumed to be spherical? Now solution is that 1 mole of nitrogen gas contains 6.02 into 10 to the power 23 nitrogen molecules at NPP, has the volume 22,400 cm. Hence average volume available to 1 mole nitrogen at molecule और छोटा करना पड़ेगा मॉलिक्यूल एट NTP, तो ये हो जाएगा 22,400 अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये हो जाएगा एवरेज वैल्यू। लेट द रेडियस ऑफ द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आर, वैल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे कितना निकाला है हमने 3.72, ये भी वैल्यूम है, तो दोनों को इक्वल करने पे आर की वैल्यू आ जाएगी। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द नाइबरिंग एटम्स हो जाएगा 2r, तो जो
टू आर करने पे ये 1 आर की वैल्यू ये 2 हो जाएगी। ये डिस्टेंस क्या होगी बिटवीन टू नाइबरिंग मॉलिक्यूल्स। Now another example, calculate the temperature of a gas if it obeys van der Waal equation from the following data. A flask of 25 liter contains 10 mole of a gas under 50 atmosphere. Given A and B, value of the A this and value of the B this. The given P is equal to 50 atmosphere, B is equal to 25 liter and N is equal to 10 mole, and A and B given here applying van der Waal equation। van der Waal equation ये सामने है, सारी वैल्यूज पुटअप करने पे हमें P इज इक्वल टू क्या मिलता है, केल्विन में टेम्परेचर आएगा 273 माइनस करके 1256.93 डिग्री सेंटीग्रेड। Now for oxygen gas, the van der Waals constant G is 0.0318 liter per mole. Calculate the radii of oxygen molecules assuming it to be spherical. We know that P is equal to 4 into volume occupied by molecules in 1 mole of the gas। तो ये हो जाएगा जो वॉल्यूम है 4 इंटू 4.3, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं इतने। तो सारी वैल्यूज हम बराबर करने पे R3 की वैल्यू यहाँ पे निकल आएगी 3.15 इंटू 10⁻⁻24। तो ये R³ की वैल्यू थी, तो R सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगी 1.47 पॉइंट इंटू 10⁻⁸। Now show that for the gas obeying van der Waals equation, PCVC is equal to 3 upon 8 RTC, where the symbol have their usual meaning. Solution, we know VC is equal to 3B, TC is equal to 8A upon 27 RB, PC is equal to A upon 27B, and PC VC upon RTC is equal to, सबकी वैल्यू रखने पे हो जाएगा PC 3 upon 8 RC। Now these are the some examples of van der Waal equation। तो इस तरह से तुम लोगों का जो रियल गैसेस के बारे में van der Waal इक्वेशन मेनली इसमें हमने डिस्कस किया, उस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल थे जिनको तुम लोग करके जो है आगे आगे में जो कुछ भी चैप्टर में बाकी है अगले क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे।